Good evening, friends. Uh, myself, Pankaj Kumar Jha. I am Deputy Director in Ministry of MSME, Government of India. As a new initiative, asked me to give a insight or give a discuss about something about wheat milling. So I'm here. As per my qualification, I did my graduation in agriculture field, and after that I did my postgrad from CFTRM Mysore. After that I I worked with Rajdhani Rural Flour Mills. There I worked for around 1.5 years. After that, good evening, Fanis. So after that, I joined Green Fiesta, which is a organic food company. We were doing importing many type of food products, processed food product, organic food products to Europe and other countries. Also, we were working for organic foods in India. After that, I joined Calpro Foods Private Limited, which is bakery ingredient, means food ingredient industry, where we work for basically for bakery products, and the main products of is this thing, your calcium propionate, which is a preservative in bread industry. After that, I worked for around 5 months in MA also, but in the meanwhile, I got selected in Ministry of MSME, which stand for Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India, and in 2012. And after that, I am currently working in same ministry. I was posted in Haldwani. Then after that, I went to Kolkata, and right now I am in ministry in Delhi, posted at Delhi. So good evening, friends who are watching this live chat. This is my first time, so I might be a bit nervous. First of all, I would like to welcome you all in this session, where I will discuss more about wheat milling technology and its scope in MSME sector. As you all know, wheat is an important cereal crop grown all over world, with an approximately annual production of around 765 million metric tons, and India is the third largest producer of wheat with an annual production of around 100 million metric tons. In India, basically two types of wheat varieties are being grown. First is soft wheat, or you can call it as common wheat, which we all found in our household, where our family members or our mother sisters are making chapatis out of it. Its scientific name is Triticum aestivum, and second one is Triticum durum, or hard wheat. The basic difference between these two varieties is the content of gluten, which is a protein which give a unique characteristic to wheat dough, like elasticity, then adhesiveness, which is most important for bakery products, and that's why wheat flour is used in all types of bakery products. Before going further in wheat milling process, let me show you a basic diagram of wheat kernel. This is a basic diagram of wheat kernel, where you can see the outer layer, which is also called as bran. Then the inner content is endosperm and a germ. Germ is the tiny plant which lies in a wheat seed, and a milling process generally focused on Fanis. I will get to your questions after this, after the technical discussion about this wheat milling. I will certainly come to you. Likewise, I am saying the wheat milling process is typically the main objective of wheat milling is to
grind cleaned and tempered wheat seeds by separating the outer layer, this bran and germ, from endosperm, internal endosperm, and to get the wheat flour. As we can further see, the previously in past, early milling of wheat was done by hard hand grinders, or you can see this stone grinder, then through mortar and pestle also. But as technology advances, now it is being done by this thing, millstones, and also roller mills. Before I tell you more about this milling process, let's see the nutrition fact of wheat. Why wheat is so important, considered to be so important a cereal product. Again, I will show you some nutrition fact. As you can see, the total wheat is majorly composed of carbohydrate, which comprised of around 72%, and the dietary fiber also is very high, which is 11%. The dietary fiber is majorly present in the bran part. It means when we do it wheat flour, so the bran, the dietary fiber percentage reduces drastically in wheat flour, but in whole wheat flours, this dietary fiber you can get it. Again, the protein percentage, as you see, is 13%. It's general is basically 13% of protein, which is majorly gluten. And again, you can see the iron percentage, potassium and calcium. But gradually, as we process it or as we grind it, and refined wheat flour is produced from it, all these minerals and vitamins get lost during this processing. So now let talk about in brief about the milling process. As I said, in recent times, two processes are being used for wheat milling. First is through millstones, and which we also known as chakki or stone grinders. And second one is this thing, roller mills. Through roller mills, we can through roller mills. In both processes, two steps are common. First is the cleaning, and second one is the tempering or conditioning of wheat seeds. So cleaning materials like chaffs, straws, insect, or you can say mud, metal particle. Sorry, I lost some this thing. So it is the cleaning is being done through machineries like separators, screens, gravity separators, disc separators, rotary separators, de-stoners, interlater, and a whole lot of series. Around 12 to 13 steps are there to clean a wheat seeds. After cleaning of wheat, it is being this thing, it is being tempered. For tempering or for conditioning of wheat, water is being added, and as you all know, the storage moisture of a wheat seed is around 12 to 12.5%. But for a wheat to be grinded, it should have a moisture content of around 17 to 18% for making the loss during the grinding process, during the heating of the wheat flour during grinding. So we have to add moisture to it, and it's generally the wheat moisture content should be around 18 to 19% before it goes into wheat milling. So again, this tempering should be done 6 to 24 hours 6 to 24 hours before grinding, and it's a most important step to get a good quality wheat flour. Now we come to grinding process. So grinding process in chakki, we have two millstones kept on each other. One is stationary and the above one will rotate, and due to this
rotation, differential speed of the two millstones, the seeds are being grounded, the wheat seeds are being grounded and then sifted through sieves to get the final product, which is mainly whole wheat flour. And as we know, the wheat milling is being determined by the extraction rate or percentage extraction rate or yield. So in a stone grinders, we are generally looking at a extraction rate of 92 to 95%, means only 5 to 8% of wheat bran and germ are being taken out, and rest is being grounded and given to you. But in roller mills it is a whole lot of different process. In the roller mills, first of all, the cleaned and tempered wheat seeds are being given in break rolls. First of all, these are metal rolls, steel rolls, metal rolls with gyrations are on them, with furrows on them, and they usually break down the whole wheat into finer particles, and then it is the grits or the material coming out of that break rolls is being given to plant shifters. Sieves set up on a horizontal basis, and it can have mesh size, different mesh sizes. Mesh sizes is generally being used to differentiate the different particle according to its size. When it is being given to plant shifters, different particle, the products is being graded into different different fractions of different particle size. So there can be a series of break rolls in roller mills. Generally 5 to 7 break rolls are being put in a series, and after each break rolls one plant shifter should be there to take out, to separate the different fractions according to their particle size. Again, the final after this break rolls and plant shifting, bran is being removed from the wheat flour and semolina, what we know as suji or rava, is the product after this break rolls, and after this maida or refined wheat flour and semolina is being given to smooth rolls. Then again, smooth rolls can be in a series. Around 3 to 5 smooth rolls are there, which further refine or further break down the product into more finer particles and more smooth particles. So in first part, where break rolls are there, the two rolls are moving at a different rate. First roll is moving 2.5 times faster than the second roll, and in smooth rolls it is 1.25 times faster, means differential rotation is there, again speed is there, due to which the particles are being broken down. These all again are being given into purifiers, you can say, for removing any bran particles. If it is there, it should remove any bran particles. So as we all know that around 82% is endosperm in a wheat and 18% is bran and your germ particle, but only the extraction rate is during milling, doing roller mills is mainly 70% of refined wheat flour, then 12% is resultant atta, or you can say wheat flour, but it is not a whole wheat flour, and then 18% is bran. That 70% refined wheat flour can also be differentiated into patent flour, refined wheat flour,
and then we can get semolina out of it, dalia out of it. Again, bran also can be differentiated into coarse bran, fine bran, and super fine bran. And this super fine and fine bran are being used as a dietary fiber source, which we can add into our daily roti, or we can have it like as isabgol. And that coarse bran is being used as an animal feed. So we can see each and every part of wheat is being utilized. Major part is being utilized by humans, and single part is being utilized by animal, processed bran. As per SFSSI, the basic difference between whole wheat flour and refined wheat flour, like I say, is mainly on two parameters. First is S content, total S content, and second one is your particle size. So for refined wheat flour, particle size should be less than 160 microns, and for whole wheat flour it should be less than 500 microns. So the whole wheat is slightly coarser, and refined wheat flour, because the particle size is less, it's smooth and white, as you can all see. And again, the S content mainly, okay, I will come to it. What are the challenges faced by wheat millers in India? The major challenges faced by wheat millers in India is basically the quality of wheat what they procure through local markets. First of all, if you see, Madhya Pradesh wheat is considered as the best wheat. जो मध्य प्रदेश से आती है, इट्स द बेस्ट wheat. और पंजाब के wheat, we can say कि they are the major growers Punjab, but their wheat is not of superior quality and is not being utilized for production of refined wheat flour, which is being used in bakery industries. And bakery industry like durum wheats, like wheat of Madhya Pradesh is manufacturing this thing. So availability of durum wheat throughout India in large quantity is the major challenge what I see for wheat millers. Again, the rising prices of electricity and government policies that also hamper their products. So as I was telling ki, as per FSSI, percentage S content for whole wheat flour should be more than 1%, and it is around 1.4%, and for refined wheat flour it should be less than 1%. So okay, why wheat has become so popular in application in different food products, as again asked by Arnab. As I already mentioned, protein called as gluten. So gluten gives wheat flour a unique property for elasticity and your adhesiveness. In wheat, in bread, in bakery products, you all know that the elasticity and is very well required to help in rising of products, or to keep it safe during baking process. So gluten is the main ingredient. Okay, Arnab, I will answer these questions afterwards. So let me finish first. As I was telling that whole wheat flour and refined wheat flour are basically different in your percentage S content and particle size. Again, this is the basic thing. मतलब अगर आप एक नट सेल में हम मुझसे पूछे कि व्हीट मिलिंग प्रोसेस क्या है, तो जस्ट शो यू अ डायग्राम. दिस इज व्हाट रूरल मिल wheat processing is. This thing means wheat seeds are being fed into rural mills, and after that plant shifters are there. Plant shifters is nothing but a series of sieves of different masses, and there we can see of 4 different type of mass sizes, and we are getting 5 different type of intermediate wheat products, which is further being refined, and we can get whole lot of product. Again, to getting
quality wheat products like dalia, semolina, and all those things, we need roller mills and a series of roller mills, not a single one. This is in nutshell a roller mill, what roller mill are doing to a wheat product. And टू गेट, क्योंकि अर्नब ने कहा कि इट इज़ टू बी इन अ लेमन टर्मिनोलॉजी, तो लेमन टर्म में मैं बोलता हूँ कि कई लोगों को ये नहीं पता होता कि सूजी हुआ, रवा हुआ, अगेन मैदा, ये सब चीज़ें वीट से ही आती हैं. तो हाउ दीज ऑल डिफर्स, सूजी और रवे का हमारा कलर जो है इट्स स्लाइटली क्रीमी एंड दिस मैदा इज़ होल लॉट वाइटर, और वहीं पे होल व्हीट फ्लोर जो है वो ब्राउन होता है. तो इतना कलर डिफरेंस क्यों है? तो इट बेसिक इसमें सिंपल साइंस है, साइंस ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन. जितना हमारा पार्टिकल साइज छोटा होता जाता है, जितना हमारा पार्टिकल स्मूथ होता जाता है, उतना ही वो वाइटर होता जाता है. सो इसके लिए आप अगर हम वी सी कि ये जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, इट इज़ सिंपली डिसाइडेड बाय द पार्टिकल साइज एंड द स्मूथनेस ऑफ दैट प्रोडक्ट. अगर आप एक आटा जो घर में रोटी बनाने के लिए यूज करते हैं उसे छू के देखेंगे तो इट इज़ मच कोर्सर, वो हाथ में इतना स्मूथ नहीं लगेगा. बट आपका मैदा को, क्योंकि वो बहुत फाइन होता है, बहुत स्मूथ होता है, तो वो हाथ में एज ए टेल्कम पाउडर इट इज़ फेल्ट लाइक एन टेल्कम पाउडर. सो अगेन मैं इसके अलावा कहते हैं जो सेकंड पार्ट है इसके व्हीट मिलिंग का सेकंड पार्ट था कि हाउ MSME सेक्टर कैन लुक ऑन दिस व्हीट मिलिंग प्रोसेस इफ वी गो फॉर ग्राउंड दिस थिंग स्टोन ग्राइंडर्स. सो स्टोन ग्राइंडर्स, देयर टू मैनी manufacturers are there. So a whole wheat milling plant of a stone grinder will cost you around 25 to 40 lakhs, and after that you can produce good quality of wheat flour. I will not prefer normal stone grinders which are being kept at your locality. So if a food technologist point of view, अगर एक हम टेक्नोलॉजी या एक क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टोन ग्राइंडर्स जो प्रॉपर क्लोज्ड हों, आफ्टर दैट इट शुड बी सीव्ड थ्रू प्लांट शिफ्टर्स. उसके बाद हम जो प्रोसेस करते हैं इट शुड बी देयर, एंड बिफोर दैट क्लीनिंग ऑफ व्हीट एंड टेम्परिंग ऑफ व्हीट शुड बी डन. तो इसके लिए अगर एक MSME सेक्टर, क्योंकि अगर मैं MSME की डेफिनेशन करते हैं तो समथिंग अराउंड 5 crores 10 crores अगर हम किसी में इन्वेस्ट करें तो इट कम्स अंडर MSME सेक्टर. सो द होल प्रोजेक्ट कॉस्ट कैन बी समथिंग अराउंड 2 to 2.5 crores including raw material and the consumables what we are using, because the basic raw material is wheat, and wheat is something around 1200 to 1300 per metric ton or per quintal. Per quintal, not per metric ton. So उसके अलावा हम जब कहते हैं इसकी बात करते हैं तो आप कहते हैं कि द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन MSME इज टू वेयर टू गेट दिस क्रेडिट. तो अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो आवर मिनिस्ट्री इट इज़ हैविंग टू मैनी दिस थिंग योर policies. First policy is credit guarantee scheme, CGTMSE, where you can get a loan up to 2 crores from any nationalized bank or commercial bank, cooperative banks. Around 52 banks are having MOU with Ministry of MSME. They will provide you a loan without any collateral guarantee. I am getting too many questions. First, let me finish this thing. So, credit guarantee scheme, in this you can get up to 2 crores of loan from any bank without any collateral guarantee, but you have to invest around 35 to 40% your money, and rest will be provided by bank. And it depends upon the area. Like in Northeast, it can be up to 85% what Ministry of MSME will this thing guarantee your loan. Again,
apart from this, if you wish to have a working capital, so up to 50 lakhs and without any guarantee, bank will provide you working capital also, credit fund also. So first is this. Again, there is many scheme where you can go for this thing. Startup India program, where banks are giving loan up to 1 crore to weaker section like women, entrepreneur, SC, ST or physically handicapped persons. So there are too many these things are there. So this is a thing. Again, for details of this thing we can discuss it separately also. But Ministry of MSME is being working or giving handholding support to prospective entrepreneurs. So right now I will just take up some questions which are being thrown by you people. Like Fanish Talwar wrote, Fanish wrote कि have you prepared specifically for MSME, and they too have a specific position for agri-food graduates. So I would like to like to share with you that our ministry, means our this post assistant director and directors, they have made a cadre. Cadre means like IAS. We are now called as IEDS cadre, Indian Enterprise Development Services, and for this we have too many vacancies coming in a year or two. It is around 200 to 300 vacancies are coming, and not all for food but through all different fields like electronics, electrical, mechanical, metallurgy, and food is also there. So I can say that around 20-25 vacancy will be there for food sector also, food scientist also, and it will be through UPSC only because it is a Government of India graded officers post, so it will be through UPSC. For me, at that time they have taken interview by UPSC for getting into this. In 2012 I got selected and posted as assistant director. Now I have been promoted to deputy director. This type of session will help common man and food technologists. Again I will take another this thing is why it has become so popular. Somebody asked about gluten. So gluten, as you can all see कि Arnab is making some food products of gluten free food products. So somebody might be, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ठीक है, एक बंदा बोल रहा है ग्लूटेन मत खाओ, दूसरा बोल रहा है ग्लूटेन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो व्हीट के प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे. तो इट इज़ सिंपली दिस थिंग कि ग्लूटेन एक प्रोटीन है और एलर्जी किसी भी इंसान को प्रोटीन से हो सकता है. प्रोटीन क्योंकि एक एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी भी प्रोटीन नेचर में होता है. तो इसके लिए कहते हैं अगर ग्लूटेन किसी की बॉडी अगर ग्लूटेन को एक एंटीबॉडी एलर्जेंट समझ ले, सॉरी एंटीबॉडी कह रहा हूँ, एलर्जेंट समझ ले, तो उसकी बॉडी उसके लिए प्रक्रिया देती है कोई भी प्रोटीन अगर उसके अंदर डाला जाता है तो. सो अराउंड एज अर्नब ऑल्सो से कि अराउंड 30% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज सीलियक दिस थिंग सफरिंग फ्रॉम सीलियक डिजीज और आर नॉट resistant to gluten. So it is for not for those 30 people to eat wheat products, but apart from that 70% can easily have this wheat products. Again, allergy can be of extreme conditions or can be of mild conditions. Mild conditions people can have wheat products, there is not an issue, but simply it is a sort of allergy which can be caused by any protein. It can be caused by eating meat also. अगर मीट का कोई ऐसा प्रोटीन है जो बॉडी उस एलर्जन की तरह देख रहा है तो वहाँ से भी आपको एलर्जी हो सकती है. तो डोंट कंफ्यूज इन बिटवीन कि ग्लूटेन बैड प्रोटीन है. ग्लूटेन इज नॉट अ बैड प्रोटीन बट इट इज आवर बॉडी हाउ वी रिस्पॉन्ड टू इट. देन उसके बाद अगर हम आते हैं कि व्हाट आर द कोर्सेज अवेलेबल थ्रू विच यू कैन गेट ए सर्टिफाइड व्हीट मिलर. व्हीट मिलर के कई सारे कोर्सेज ऑल ओवर इंडिया चलते हैं. तो CFTI में अराउंड 10 to 11 मंथ्स का एक कोर्स है वेयर यू कैन गेट
सर्टिफिकेट फॉर अ वीट मिलर। तो वो एक क्योंकि हमारे साथ हमने एमएससी किया था, हमारे साथ 2 साल में 2 बैच निकले वहाँ से। बैच में अराउंड 20 to 25 पीपल स्टूडेंट्स रहते हैं, एंड यू आर गेटिंग अ सर्टिफाइड वीट मिलिंग this certificate, wheat miller certificate, and it is being recognized by all over world. जो मेरे साथ जिन लड़कों ने किया, आई नो दे आर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड एज मिलर्स, एज हेड मिलर्स। और आप इसको कभी भी यू कैन गो टू CFTRI वेबसाइट एंड यू कैन चेक इट फॉर वीट मिलिंग कोर्स। और मैं इसको और CFTRI को इसलिए और वो करूँगा कि देयर यू कैन गेट अ हैंड ऑन एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी आर गो साइड बाय साइड। अगेन 5 pointers asked कि हाउ अ फूड टेक्नोलॉजी कैन इम्पैक्ट इन बेटर रनिंग ऑफ अ वीट मिल। तो वीट मिल एज आई से कि क्वालिटी इज ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज अगर एक बंदे को नहीं पता हो कि दिस थिंग फॉरेन मटेरियल्स क्या होते हैं और हाउ एज कंटेंट कैन अफेक्ट योर क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट, सो दिस थिंग्स आर बीइंग monitored by, are being controlled by food technologists। तो फूड टेक्नोलॉजिस्ट एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट एज पर नॉर्म्स, FSSAI के नॉर्म्स होते हैं और डिफरेंट अदर नॉर्म्स आर देयर, सो दे कैन हेल्प देयर in wheat milling। And again you can extract more and more of this endosperm by applying your knowledge there। MSME कैसे फूड इंडस्ट्री इकोसिस्टम पे काम कर रही, तो बिंग मोर जॉब एंड क्वालिटी प्रोडक्ट इन द मार्केट। लाइक अभी जो गवर्नमेंट है हमारी, सो स्किल इंडिया प्रोग्राम तो उन्होंने चलाया ही है विथ अगेन आवर MSME मिनिस्ट्री वाज देयर, बट दे हैव मेक अ डिफरेंट मिनिस्ट्री जो कि इससे पहले कभी किया नहीं गया था, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट MSDE जो है एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो दे आर मेनली फोकसिंग ऑन ट्रेनिंग ऑफ वर्क फोर्सेज फॉर दीज MSMEs। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी मिनिस्ट्री जो है वो दे हैव अ हेल लॉट ऑफ आई थिंक अराउंड 15 to 20 policies to help all these MSMEs who are being working in India। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि यू हैव टू फर्स्ट गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड। अगर आप अपना कोई भी काम शुरू करते हैं तो यू आर गेटिंग दिस थिंग trade license, you are getting food FSSAI license। Apart from that you should also take MSME registration, because MSME registration is free of cost and it is known as Udyog Aadhaar memorandum। So Udyog Aadhaar memorandum, you just have to register it through online, you don't have to submit any papers to it, you have to just fill some information, it is around 5 to 10 minutes it will take, and you will get an online certificate, online acknowledgement that you have been registered with MSME। So after being registered with MSME you can make use of all of our policies without any hesitation, and we don't come to your place। So अगर आप किसी को जानते हैं या आप कहीं काम कर रहे हैं जो MSME की बेनिफिट्स लेना चाहता है, तो यू हैव टू फर्स्ट गेट रजिस्टर्ड थ्रू उद्योग आधार मेमोरेंडम। अगेन ही सेड कि डिड इट हेल्प यू विद डिग्रीज इन एग्री एंड फूड टेक्नोलॉजी। हाँ, अगर मैं कहूँ कि फूड टेक्नोलॉजी से पहले मेरा एग्रीकल्चर डिग्री थी, यस इट रियली हेल्प मी। लेकिन कुछ हमारे साथी थे जो पहले से फूड टेक्नोलॉजी करके आए थे, सो फॉर देम MSc डिग्री वाज अ बिट ईजियर, बट फॉर अस वी आल्सो नो द आप कहते हैं से एक चेन बोलते हैं, जो सप्लाई चेन है, वी आल्सो नो दैट पार्ट आल्सो, कि कहाँ से क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसकी क्वालिटी कैसे डिफर करती है। एक क्वेश्चन है कि क्या घर से वीट फ्लो का बिजनेस कर सकते हैं, तो घर से वीट फ्लो का बिजनेस डिस्कनेक्टेड, घर से वीट फ्लो का बिजनेस हम कर सकते हैं इसके लिए, बट द इन्वेस्टमेंट समथिंग अराउंड 2 to 5 lakhs। इसकी आपका सिंगल जो रोलर मिल्स आते हैं वो रोलर मिल्स क्या है, सिंगल स्टोन ग्राइंडर्स जो आते हैं, यू कैन यूज दैट थिंग, बट मेक श्योर कि जो व्हाट यू आर यूजिंग इट शुड बी क्लीन फर्स्ट, देन इट शुड बी टेम्पर्ड, उसके बाद उसके अंदर आप ग्राइंड करिए, देन इट शुड बी सीव्ड आल्सो।
अगर आप उसे सीव नहीं करेंगे तो इट इज़ पॉसिबल दैट आपके उसके अंदर जो स्टोन के पार्टिकल्स दे मेक गेट इन टू योर फीड फ्लोर, जो उसकी क्वालिटी को डिग्रेड करती है। उसके अंदर अलावा वीट ब्रांड जो है दैट कैन डिग्रेड योर this thing, quality of wheat flour. So whole wheat flour business can be done through home, लेकिन refined wheat flour के लिए you have to get some sophisticated or rural mills plant. So yes, whole wheat flour business can be done through home. It doesn't require much space. It generally it requires a space of 15 by 15 feet, so it can be done. How to reach MSME with a project proposal? See, MSME we are into service industry. हम अगर कहें तो हमारा काम है कि इंटरप्राइजेस जो हैं, इंटरप्रेनर्स जो हैं, उनकी सेवा करना। हम कहते हैं किसी को कोई फंड नहीं देते। कुछ एक आध हमारे कहते हैं वहाँ है जहाँ पे हम रिम्बर्स करते हैं। अगर आपको मान लीजिए कहीं कुछ क्वालिटी में आपको हेल्प चाहिए या आपने पेटेंट किया है तो उसमें हम रिम्बर्स करते हैं, लेकिन सिंगल टाइम रिम्बर्समेंट टू जस्ट गिव यू अ बूस्ट कि ठीक है हम आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, हम आपको बढ़ावा दे रहे हैं। बट जब एक आदमी क्वालिटी को समझ जाता है, टेक्नोलॉजी को समझ जाता है, उतने तक हम उनकी हेल्प करते हैं। उसके बाद उनको उसी से प्रॉफिट होता है। वो जब इसको समझ में आ गया तो ही विल कंटिन्यू इन दिस थिंग। एंड email ID, I will share my email ID, not an issue. My email ID is pankaj.k.jha. I am just starting in, wait for a moment, 83 @gov.in. Right, I have written my email ID in comment section. So if you want to come to MSME, you just have to register with MSME, and you can always welcome. You are always welcome to any of our development institute. We have offices in each and every state, and like in Uttar Pradesh we have 3 offices. So you can get a full list on our website dcmsme.gov.in. I will again write it down for your convenience in comment section. You can go to this website and you can search it out. We have a whole lot of policies and the addresses of each and every offices of us, and you are welcome, always welcome. Is there an opportunity to export wheat products, especially refined flour? See, for refined flour, India is स्टिल नॉट सेल्फ सफिशिएंट। अगर हम बोलें तो ये एसेंशियल कमोडिटीज़ में आ जाता है वीट प्रोडक्ट जो हैं। तो अगर आप कहें कि हम उसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्टिल ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर अटक जाता है, क्योंकि हमारे पास इतना वीट है, लेकिन वी कांट, अगर हम उसे एक्सपोर्ट के लिए, जैसे हम राइस का एग्जांपल लेते हैं, राइस में सिर्फ बासमती राइस और बिंग जो भी 50 रुपये से ज़्यादा पहले था, अभी आई थिंक 80 रुपीज़ से ऊपर जो भी राइस होता है सिर्फ उसी को अलाउ किया जाता है एक्सपोर्ट करने के लिए। जो लोअर जो पुअर सेक्शन के लिए, जो मिडिल क्लास के लिए राइस है, इट इज़ नॉट बीइंग एक्सपोर्टेड, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है। तो वीट प्रोडक्ट्स या कहते हैं रिफाइंड वीट फ्लोर को एक्सपोर्ट करने की अपॉर्चुनिटी है नहीं है। ये आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट काउंसिल से एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, एंड DGFT विल गिव गाइडलाइंस इनटू दिस इफ़ यू विश। अगर आपका चीज़ अच्छी है या लाइक आप सिंपल वीट फ्लोर ना बना के अगर आप कुछ उसका स्पेशलाइज प्रोडक्ट बनाते हैं लाइक fortified wheat flours and all those, that can be exported. Yes. What inspired you to leave a career in private food sector? So Arnab asked me a question कि मैंने अपना प्राइवेट फूड इंडस्ट्री का कैरियर छोड़ के गवर्नमेंट सेक्टर क्यों ज्वाइन किया। यस, जब मैंने प्राइवेट सेक्टर छोड़ा तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी। इफ़ आई से आई वॉज गेटिंग हाफ द सैलरी इन गवर्नमेंट सेक्टर, और प्रोस्पेक्ट प्राइवेट में अच्छे थे, गवर्नमेंट सेक्टर इज़ मोर मैनेजरियल रेदर देन टेक्निकल। लेकिन
आई हैव अ नोशन कि जब हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो वी मेट एन ऑफिसर और एन एम्प्लॉय जिसे देख के हमें खुशी नहीं होती। तो मैं चाहता था कि एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट से मैंने अगर पढ़ा हो और अगर मैं उसे आई कैन गिव इट टू बैक टू सोसाइटी rather than working for an MNC, it will give me pleasure. और again, if anybody comes to my office, he should leave happy कि हाँ मैं किसी एक ऐसे ऑफिसर से मिला जो हेल्प करने की चाह रहा है एंड नथिंग एल्स। सो दिस इज द माई बेसिक दिस थिंग रीजन टू ज्वाइन दिस थिंग government sector. My hobby are, you can say, were, because as life goes on, my hobbies were are to learn different rules of rules of different sports. I like to watch sports, I like to play, but right now I don't find much time to play, but still I like to watch sports, then learn this thing. Currently in this lockdown I started a new hobby for cooking food. You can say कि as a food technologist I don't know, मुझे खाना बनाना सच में नहीं आता, जो मेरी वाइफ को भी कभी कभी लगता है कि क्या है ये, बट आई स्टार्टेड अ न्यू हॉबी टू लर्न हाउ टू कुक. Again, COVID-19 changing the food industry and consumer behavior and MSME in India. I think the least affected sector will be food sector by this COVID-19, because it is an essential commodity. Apart from that, I also feel कि MSME in India will get benefited from this, as localized this thing production units are in the need of this time, because all these cross border transport is blocked, is not so easy. So localized, अगर हम food industry इसमें develop करेंगे तो localized is through MSMEs only. MNC will not put money into that. So there is much scope after this COVID-19 also, and through this also, through this situation also, MSME will certainly help in fighting this COVID-19. Does gluten leads to diabetes? Okay, so I will say no, because gluten is a protein and not a your this thing कार्बोहाइड्रेट. लेकिन जैसा मैंने बोला कि वीट प्रोडक्ट में अराउंड 72% आपका कार्बोहाइड्रेट होता है. तो इफ़ यू आर टेकिंग अ वीट प्रोडक्ट, यू आर आल्सो कंज्यूमिंग 72% ऑफ carbohydrate, which can lead to not lead to diabetes, that can आपको कहते हैं अगर डायबिटीज है तो you should avoid eating wheat products, but it will not certainly lead to diabetes. As far as I know, I have not come anybody so जिसको gluten के कारण डायबिटीज हुआ हो. अभी एक क्वेश्चन हो रहा है, वाई डिग्रीज लाइक फूड टेक्नोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन, डाइट टेक्नोलॉजी, फूड बायोटेक, होम साइंस etc आर सो इम्पॉर्टेंट. ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो खाना मैं पैकेट खाना जो मैं खा रहा हूँ, मुझे उस पर भरोसा होना चाहिए कि इट इज़ सेफ फॉर मी, माई फैमिली, माई चिल्ड्रन एंड माई एल्डर्स. तो उसके लिए फूड टेक्नोलॉजी और जो भी हमारे पास फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन है, हमारे पास एक न्यूट्रिशियस फूड आ रहा है, एक बैलेंस डाइट आ रही है, इसके लिए ये सब बहुत ज़रूरी हैं. विदाउट डैट नाउ, बिकॉज कहते हैं पहले ज़माने में हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा था, हमारा मटेरियल भी अच्छा था, लेकिन इन करंट सिचुएशन दीज पीपल, दीज डिग्रीज आर quintessentials. Is there any process through which we can extract gluten through wheat? Yes, gluten are being extracted through wheat. जैसे भी प्रोटीन जनरली निकाले जाते हैं, इस तरीके से ग्लूटेन भी निकाला जाता है. अर्नब ने भी बोला है, और ग्लूटेन सिर्फ हमारे वीट में नहीं, राई और RYE, राई, आपका ओट्स एंड बार्ली में भी पाया जाता है. तो चीपर जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं वहाँ से ये ग्लूटेन भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है. एंड ग्लूटेन आर बीइंग यूज्ड बाय बेकरी इंडस्ट्री, जहाँ पे क्योंकि एक टाइम आता है जब आप कहिए फरवरी से मार्च अप्रैल के बीच में, व्हेन न्यू वीट क्रॉप कम्स,
तो वहाँ पे ग्लूटेन तब तक इतना डेवलप नहीं हुआ था। हमें ग्लूटेन को डेवलप करने के लिए आफ्टर हार्वेस्टिंग समथिंग अराउंड 2 months इट शुड बी केप्ट इन स्टोरेज टू डेवलप द ग्लूटेन प्रॉपरली। तो वहाँ पे जब हमारे पास वीट आता है, वीट फ्लोर आता है, एट दैट टाइम इट इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, तो देयर ग्लूटेन इज बीइंग यूज्ड। और जहाँ हम सॉफ्ट वीट फ्लोर ही मिल रहा है जिस एरिया में, और वहाँ पे मैं ब्रेड बनाना चाहता हूँ, तो वहाँ पे जो ग्लूटेन यूज करना पड़ता है। यस, ग्लूटेन आर बीइंग एक्सट्रैक्टेड एंड इट इज़ अ ह्यूज इंडस्ट्री, gluten selling gluten. Thus MSME organized training seminar also. Previously yes we are organizing training seminar, लेकिन अभी हमारा मेजर फोकस है कि हम जो ये जो हमारे एसोसिएशंस हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, उनके साथ मिलकर सेमिनार्स करते हैं. सो if you wish you can get in touch with your local MSME development institute and they will give you the better idea कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ के कहते हैं MSME DI को आप कांटेक्ट कीजिए. These seminars, these workshops are free of cost, majorly free of cost or of nominal fees. We are not demanding high fees for this thing. So लेकिन आपको अपने पर्टिकुलर प्लेस पे ही इसके लिए पता करना पड़ेगा. Can we use wheat milling setup for millets processing also? हाँ, wheat is a kind of grain. So if we process wheat through this thing, we can also process millets. But stone grinders may be used in this, and again other also. But millet processing is something different. If you say कि I want to make flour only, grinding of millets, it is there. But if you want popping and other things, certain other sets of this thing is required. लेकिन हाँ, wheat milling setup can be used for millet processing also. Paneer Salwar, at which location you are serving, sir? देखिए, right now I am at headquarters. Headquarters is looking the whole India. तो मैं अभी दिल्ली में ही posted हूँ, but in headquarters. So but also I have given you my email ID. If you want any help, you can write me with your particular place also कि कहाँ पे आपको क्या ज़रूरत है. Then I will forward your request to the concerned DI. They will help you out. What is your definition of successful person in life? ये एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेस की डेफिनेशन आई कांट डिफाइन, क्योंकि कभी ना कभी अगर आप संतुष्ट हैं अपने आप से तो यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन. बट येस, जो आपने अर्न किया है, चाहे वो नॉलेज हो चाहे मनी हो, अगर वो आप अपने नेशन के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए यूटिलाइज कर सकें, अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, सो इन अ गुड मैनर, सो यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ. सो यू हैव रिटन की या डिफरेंट लाइफ साइंस इंडस्ट्री, होप 5 पॉइंटर्स इंस्पायर्स यू. 5 पॉइंटर्स के साथ मैं पिछले आई थिंक 5-6 साल, जब से अर्नब ने ये स्टार्ट किया तब से वी आर इन टच, हम अच्छे दोस्त हैं. सो आई एम इन दिस थिंग. तो अनीस, सब्सिडी सर, सब्सिडी आपको किस तरीके की चाहिए उस पर डिपेंड करता है. हमारी पॉलिसीज़ हैं नो कि अगर कोई सब्सिडी है या नहीं, जो प्रोजेक्ट आप लगाना चाहते हैं. देखिए, MSME इज़ नॉट, टू मेक इट क्लियर, MSME इज़ नॉट जस्ट फॉर फूड, MSME इज़ फॉर ईच एंड एवरीथिंग. राइट. थैंक यू ऑल for your time, and thank you Jitendra ji, thank you Kishore, thank you Abdul. All of you kept me engaged. At first I was a bit nervous, but you people make me. Hi Utkarsh. So Anu also joined, I think so. So but right now I'm signing off. So if anything you wish to know, I might miss many points, but if anything more you want to know, because I have a experience in this thing, first wheat milling processing, after that I have experience in baking industry also, next company in organic food industry or bakery ingredients. You can always write to me at my email ID. I'm signing off. So thank you all for watching.
Bye. Take care.